हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें इंग्लिश ऑनर्स में द नन्स प्रीस्ट टेल पढ़ना है, जो चौसर के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू टेल यू द जिस्ट ऑफ द नन्स प्रीस्ट टेल। तो हियर आई वुड लाइक टू टेल यू Chaucer's monumental work is the Canterbury Tales. It is his magnum opus. So there are 24 stories in the Canterbury Tales, and of those 24 stories, the Nun's Priest Tale is one of them. तो कैंटरबरी टेल्स में चौसर द्वारा 24 कहानियाँ उल्लिखित हैं और उन 24 कहानियों में से एक कहानी है द नन्स प्रीस्ट टेल। तो इसका जो प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है और जो हीरो है, ही इज़ अ रूस्टर। रूस्टर स्पेलिंग इज ROOSTER। रूस्टर मीन्स कॉक, एक मुर्गा। ठीक है, तो द हीरो और द मेन कैरेक्टर और द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी इज अ रूस्टर हुज नेम इज चैंटिक्लियर, एंड दैट चैंटिक्लियर हैड 7 wives। तो उसकी 7 पत्नियां थीं, एंड हिज मोस्ट फेवरेट वाज पटलोट। हर नेम इज पटलोट। द स्पेलिंग इज PERTELOTE। आई रिपीट, PERTELOTE, पटलोट। So Patalot was his severest critic also. So one day what happens? Here I would also like to remind you that this story takes place at a farm, and that farm is owned and managed by a widow. तो ये कहानी जो है एक फार्म में घटित होती है और उस फार्म की जो मालकिन है एक विधवा है, एंड दैट विडो हैड 2 daughters. तो I have already informed you that Chanticleer is the protagonist. He had 7 wives. So one morning when Chanticleer wakes up, right, and he tells his favorite wife Patulot that he had a nightmare. Means he had the frightening dream. उसने एक भयावह स्वप्न देखा, ऐसा वो अपनी पत्नी से कहता है। और उसने स्वप्न में देखा कि एक फॉक्स, FOX, फॉक्स, एक फॉक्स उस पर अटैक करता है। He saw in his dream that certain fox was attacking him. So when Patalot hears it, she ridicules him, saying that he is a coward. वो कहती है कि तुम तो बहुत डरपोक हो। Dreams have no meanings. Dreams are meaningless. Dreams are useless. स्वप्न निरर्थक होते हैं, स्वप्न का कोई मतलब नहीं होता, तुम बिल्कुल कायर हो, तुम डरपोक हो। इस तरह से उसकी जो फेवरेट वाइफ है पटलोट, वो उसका उपहास उड़ाती है। बट पटलोट थिंक्स दैट रूस्टर मस्ट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम कंस्टिपेशन। कंस्टिपेशन कहते हैं कब्ज़ को। तो शी एडवाइजेज हिम to take some laxatives. Laxative कहते हैं रेचक, स्पेलिंग है LAXATIVE, laxative। तो पटलोट रूस्टर को एडवाइस करती है क्या? टू टेक सम laxative, and thus he'll be free from constipation. But the rooster was not ready to believe his wife. He argues with Patalot. He cites or he quotes examples from history and literature saying that dreams do have meanings. यानी स्वप्न निरर्थक नहीं होते, स्वप्न के भी अर्थ होते हैं, और ऐसा वो इतिहास और साहित्य से कई उदाहरण प्रस्तुत करता है। लेकिन इसके बाद भी चैंटिक्लियर अपनी पत्नी के सलाह को मान लेता है और निर्णय लेता है कि उसे स्वप्न के विषय में ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। तो नाउ ही गोज़ टुवर्ड्स द यार्ड, एंड व्हेन ही रीचेज द यार्ड ही फाइंड्स that a fox was watching him.
अब यह देखकर रूस्टर घबरा जाता है. Now the rooster was afraid because he finds that a fox was watching him. Now that fox reassures him not to be scared of him. He reassures him that he has just come to listen to his melodious voice. Here, I'd like to tell you, the rooster was quite vain also, right? And he was supposed to be the most handsome creature at that farm. And he was also the master of melodious crow. So when the fox reassures him that he has come just to listen to his melodious voice, now the rooster was under the influence of the honeyed words spoken by the fox. यानी चैंटिक्लियर जो है चिकनी चुपड़ी बातें जो फॉक्स ने कही थी उन चिकनी चुपड़ी बातों में वो आ जाता है. एंड ही ट्रस्ट द फॉक्स. नाउ चैंटिक्लियर shuts his eyes and he begins to sing. So as soon as Chanticleer shuts his eyes and starts singing, now this was the golden opportunity for the fox. यह एक स्वर्णिम अवसर था फॉक्स को चैंटिक्लियर को पकड़ने के लिए. And he catches the rooster by his neck and runs away. Now seeing this, all the animals present on the farm chase the fox, right? So obviously the rooster's life was in danger, right? Now the rooster asks fox to taunt those pursuers. जो उसके पीछे पीछे एनिमल्स भागे जा रहे थे, तो चैंटिक्लियर कहता फॉक्स से कि तुम इनको टॉन्ट करो, इनको तिरस्कार करो, इनको डांटो, फटकारो. Now the fox opens his mouth, and as soon as he opens his mouth, the rooster got a chance to escape. So in this way, he was free from the bloody clutches of the fox. Once again, the fox uses some sweet words, honeyed words. Once again, the fox assures him that he would now not attack him, but now the rooster had learnt a lesson. लेकिन रूस्टर ने यह पाठ पढ़ लिया था कि उसे अब फॉक्स की बातों पर विश्वास नहीं करना है. तो इस तरह से ये कहानी समाप्त होती है और इस कहानी में एक शिक्षा मिलती है. तो हियर आई वुड लाइक टू टेल यू दिस स्टोरी इज़ अ बेस्ट फेबल. नाउ व्हाट इज़ ए फेबल? फेबल मैं बताऊं कि फेबल एक कहानी है जो हमें एक नैतिक शिक्षा देती है, which imparts us a moral lesson, and in which all characters are birds or animals. For example, you might have heard about पंचतंत्र. पंचतंत्र की कहानियों के विषय में सुना होगा. पंचतंत्र is written by Vishnu Sharma. Then there is Jatka Tales. In these stories, all the characters are birds and animals. Likewise, you might have read the poem The Frog and the Nightingale, composed by Vikram Seth. That is also a story. Of course, that is in the form of verse, but that is also a fable, because in that poem, The Frog and the Nightingale, the characters are animals and birds, right? So a fable is a kind of a story in which birds and animals are characters, and it gives us a moral lesson. So what is the moral of this story? The Nun's Priest's Tale. One should be vigilant, and one should not be lured by the flatterers. यानी चापलूसों से सावधान रहो. चापलूसों की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आओ. Otherwise, you will be in danger. So the story gives us this moral lesson that one should be careful of sycophants or flatterers.
So that's all about this story. I'm sure you must have liked it, you must have understood it. मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको इसके बावजूद कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो you may post your comment. I'll certainly reply to your queries. I'll try to remove your doubts. और अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और अपने विचारों से मुझे अवगत भी कराएं. So thank you all for watching this informative video.